Hello and welcome to this discussion on trend projection method of demand forecasting. Now when we started our journey of demand forecasting, we saw that we divided demand forecasting into two broad categories. One could be qualitative and the other one could be quantitative. Now, qualitative is generally used when we are introducing a new product. Why new product? Because I do not have any past. For example, when you are introducing, let's say, a new music player, a new sound recording device. So you can get experience from earlier sound recording devices. Like in past, sound recording devices used to be the cassette players. In cassette players, you would record the sound. Previous devices could be the Walkmans, where you could play the music, where you could record the sound. But today, I'm planning to introduce a pen which can record sound. Or maybe I'm planning to introduce a pen which can record a video. So now in past, this has not been done. But in past, spy cameras have been set up. In past, spy recordings have been set up. So I can get experience from those past spy recorders, how they were selling, उनका सामान कैसे बिक रहा था, कौन लोग खरीद रहे थे, so that I could market or I could advertise my product accordingly. तो हुआ ये कि अब ये पेन जो हम पहली बार स्पाई पेन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो पहले तो बनता नहीं था, तो इसका पास तो हमारे पास है नहीं, लेकिन रिलेटेड प्रोडक्ट्स तो थे, स्पाइंग के प्रोडक्ट्स थे, ऑडियो प्रोडक्ट्स थे, रिकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स थे, तो हम उन सब से एक्सपीरियंस ले लेंगे, जिससे कि हमारे को आइडिया लग जाएगा कि हमारा प्रोडक्ट किस तरह से बिकेगा, किन लोगों को बिकेगा, हु विल बी द कंज्यूमर्स एंड सो ऑन. तो क्वालिटेटिव जनरली कहाँ यूज होता है? जनरली when you are introducing new products, new schemes, new ideas, new concepts, new philosophies, when you do not have data. हाँ, अब when I say new products, और यहाँ पे quantitative कब होता है? For existing products. When I say new products and existing product, that qualitative is used for new products, quantitative is used for existing products. It does not necessarily mean that qualitative is used only for new, quantitative is used only for existing. It is not black and white, as we have talked a lot many times, that in management, in real life, in production, everywhere, there is nothing in black and white. These are extremes, these are zeros and one, these are true and false, but everything lies between them. So, in extreme cases, generally qualitative is used for new product, quantitative is used for existing product. We talked of qualitative methods like Delphi, like customer survey, like salesman survey, like nominal group techniques. For quantitative, what we did was we divided quantitative again broadly into two categories. What were those two categories? One was associative and the other was time series based. So quantitative methods. First is demand forecasting can make use of qualitative methods, it can make use of quantitative methods. Qualitative we have talked, these days we are talking of quantitative methods. Quantitative methods themselves can be divided into time series based methods or associative methods. Time series based methods are those methods which have a past history, where I have been selling the product, where I have been producing the product, where the market has been consuming the product, there is a fixed pattern and I study that pattern. हमारे पास ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है पास्ट का, हम उसको स्टडी कर लेते हैं कि भाई किस तरह से हमारी ग्रोथ हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, कोई ट्रेंड है तो उसको स्टडी कर लेते हैं. तो दैट इज टाइम सीरीज बेस्ड, कि पास्ट को देख करके ये अंदाजा लगाना आगे क्या होना है. अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, टाइम सीरीज बेस्ड मेथड्स आर दोज मेथड्स जिन्हें हम अपने पास्ट को देख करके आगे का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं. व्हाइल एसोसिएटिव मेथड्स आर दोज मेथड्स जहां पे हम दो एट्रीब्यूट्स के बीच में एसोसिएशन निकाल करके हमारे प्रोडक्ट का फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं. लाइक हमने पहले भी एग्जांपल लिया था टाइम सीरीज के लिए कि अगर मैं पिछले 10 साल का पेट्रोल कंजम्पशन देखता हूं और 2021 का पेट्रोल कंजम्पशन फोरकास्ट करता हूं, इफ आई लुक इनटू माय पास्ट 10 years of petrol consumption and try to forecast my petrol consumption for 2021. That is a time series based method.
कि हमने अपने पेट्रोल कंजम्पशन को ही लास्ट 10 साल देखा और 11th ईयर का फोरकास्ट कर दिया। देन एसोसिएटिव का अगर हम पेट्रोल का लें तो क्या होगा, पेट्रोल इज ऑल्सो एसोसिएटेड टू नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड ऑफ कार्स, पेट्रोल इज ऑल्सो एसोसिएटेड टू नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड ऑफ टू व्हीलर्स। तो अब यहां पे क्या हो सकता है, मैं एसोसिएशन यूज करूंगा कि टू व्हीलर्स बिक रहे हैं या नहीं। अगर मार्केट में टू व्हीलर्स की ग्रोथ होगी तो पेट्रोल कंजम्पशन की भी ग्रोथ होगी, क्योंकि अगर उतने ही टू व्हीलर्स रहे, आज अगर बैन लग जाता है कि टू व्हीलर्स नहीं बिकेंगे, फोर व्हीलर्स नहीं बिकेंगे, तो पेट्रोल कंजम्पशन बढ़ेगा नहीं, उतना ही रहेगा या इट विल कम डाउन। लेकिन अगर टू व्हीलर्स की सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू गो अप, कार्स की सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू गो अप, तो आई कैन एक्सपेक्ट कि हमारा पेट्रोल की सेल्स भी ऊपर जाएगी। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एसोसिएटिव नेचर भी यूज कर सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टाइम सीरीज एंड एसोसिएटिव। इन टाइम सीरीज वी सॉ द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल मेथड्स वाज नोवाइस मेथड। एकदम सिंपल, एकदम नोविस, एकदम बच्चे जैसा, जिसके अंदर सिंपली हम क्या करते हैं, पिछले पीरियड की जो एक्चुअल्स थी उसको नेक्स्ट पीरियड की डिमांड मान लेते हैं। मंडे को जितना माल बिक गया है, डिमांड आई है, हम मान लेते हैं कि ट्यूसडे को उतने की ही फोरकास्ट रहेगी। ट्यूसडे को जितना डिमांड आई है, हम मान लेते हैं कि वेडनेसडे को उतनी फोरकास्ट रहेगी। मतलब आज की जो एक्चुअल्स हैं, आज की जो डिमांड है, हम उसको कल की फोरकास्ट मान लेते हैं। दिस वाज आवर नोवाइस मेथड। देन वी हैड सिंपल एवरेज मेथड। देन वी टॉक्ड ऑफ moving average. These are all the topics that we have discussed in this series. So you can check the playlist, you will find videos related to all these topics. Novice method, simple average method, moving average. Moving average was further classified into simple moving average and weighted moving average. We had weighted moving average. Then we talked of exponential smoothing. Now what was exponential smoothing? Exponential smoothing was a method which was making use of all other methods. It was literally best of all methods. It was taking up good qualities of all and blending them into an equation which was exponentially smoothed. And then we saw an advancement in exponential smoothing, which was including trends. This is what we have seen up till this point in demand forecasting. Today we'll be talking about trend analysis. Now what is trend analysis? We'll see today. We have two approaches for trend analysis. One could be graphical. Other one could be y is equal to a plus bx. Now in trend analysis, what I'll be doing is, I could either go with a graphical approach or I could come up with some kind of relation between the variables. One variable would of course be time, the other variable would be petrol consumption. Time series. One variable is definitely time, y or x, depending on how we are solving it. One variable will definitely be time. The other variable could be your sales, your demand, your production capacity, anything. So these two we'll be discussing today. Trend analysis, graphical method and equation method. We'll continue with the same question that we have been using all these days for all these methods up till this point. Today also, when we are talking of trend analysis, let us put the name over here. Trend analysis. The methods that we'll be talking of today are graphical method and equation method. The data that we have been using up till this point is, we had time and we had demand. The demand was 10, 12, 14, 19.
10, 12, 14, 19, 30, 23 and 40. 30, 23 and 40. Now I have been suggesting all these days that you should make use of a copy. You should make your notes so that when we are done with all these methods, we'll try to compare which method was best. And for comparison, we'll study errors in demand forecasting. So before we go there, at least what we can do right now is we should have a copy. We should write down all these questions in that copy. We should solve all these questions using all these methods in that copy. जिससे कि जब हम वहाँ पे पहुँचे एरर टेस्टिंग पे तो हम देख सकें कि कौन सा मेथड मेरे को बेस्ट रिजल्ट्स दे रहा था. टाइम्स क्या थे हमारे? लेट अस से 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. तो ये क्वेश्चन हम शुरू से यूज करते हुए आए. नाउ सपोज आई हैव डेटा फॉर 7 पीरियड्स. अब मेरे को आगे का फोरकास्ट करना है. नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ ट्रेंड एनालिसिस के अंदर वी हैव ग्राफिकल एंड इक्वेशन. ये दोनों जो मेथड्स हैं ये बेसिकली एक ट्रेंड बताते हैं. अभी तक जो हमने मेथड्स किए थे वो बाय एंड लार्ज हमारे को एक पीरियड की काफी अच्छी फोरकास्ट देने की कैपेसिटी रखते थे. ये जो मेथड्स हैं दोनों, ये आपको कोई बहुत अच्छी फोरकास्ट नहीं देंगे. ये जस्ट एक ट्रेंड बता देंगे कि आर वी डूइंग वेल, आर वी ऑन अ ग्रोथ पैटर्न, ग्रोथ ट्रेंड, आर वी ऑन अ डिक्लाइन ट्रेंड, आर वी जस्ट गोइंग नॉर्मली, एक स्टैंडर्ड वैल्यू के आसपास चल रहे हैं. तो ये बाय एंड लार्ज सिर्फ ट्रेंड प्रिडिक्शन मेथड्स हैं. इनको एज अ फोरकास्टिंग टूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हम नहीं दे सकते. बट यस, ये हमारे को एक आइडिया दे देते हैं कि व्हाट इज द सिचुएशन. इज आर बिजनेस डूइंग वेल और इज देयर समथिंग टू वरी अबाउट आर बिजनेस. कैसे चलता है ग्राफिकल मेथड? इट इज अ वेरी सिंपल मेथड. वी हैव 7 periods. And then we have demands. So we have 7 periods. So let us plot, let us say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. And then if we have a look at our demand, it is going up to 40. So let us make it up to 50. 10, 20, 30, 40 and 50. Now, for first period our demand is, I'll make use of some other color. For first period our demand is 10. For second period it is 12, somewhere here. Then it is 14 and 19. For third period it goes up to 14. For fourth period it goes up to 19. Then there is a 30 for fifth period. Then for sixth period it is down to 23. Seventh period it is shooting up to 40. Now, if this were my data, if I try to plot, again we'll make use of some other color when we have so many colors. Now, if we have a look at this data, what is the trend in this data? The trend in this data is that it is growing. There is a trend of growth. If I plot a freehand plot over here, so what will be my, you can roughly expect that for the next period, data could be either like this, or data could be either like, if this trend continues like this, or if it comes down like this. So I have somewhat slab, I have somewhat range. It is not expected that data will come down to 10. It is not expected that data will come down to 20. It may come, it may drop down to 10, 20 or 30, but it is not expected. Looking at the trend, we are going up. If this thing happens, that the data comes down, okay, we might come down. If this trend continues, okay, I might shoot up to this limit. So what is happening is, I am not getting exact values, but I am getting a tentative idea. What can I expect in next period? So this is trend projection. And yes, trend projection goes a step further. It tries to put up a straight line in this.
Now this straight line is put up in this trend data. If I remove this additional trend that we have put in, then probably we might be able to see this line. So this is how trend projects. Now of course we do understand that there can be some variations. So this is my trend and I can expect that my values in times to come will be between these 2 points. So I have a maximum, I have a minimum, I have a slab. This is how trend projection works. It will not give you exact values, it will just give you an idea where your sales are headed, where your demand is headed, what you should be prepared for. Now, how does this help? अगर मेरे को ये बता ही नहीं रहा है कि कितनी हमारी डिमांड होने वाली है, तो ये क्या काम का है? ये इस काम का है कि एटलीस्ट मैं अपने नेक्स्ट पीरियड के लिए ये तो फोरकास्ट करके रख सकता हूं कि मेरे को कितने गोडाउन्स चाहिएंगे, करीब करीब कितना बनाना पड़ेगा. अगर मेरी सेल्स यहीं पे आने वाली हैं तो फिर मैं जो एक्स्ट्रा मैन पावर यूज कर रहा हूं उसको यूज करूं या नहीं करूं, एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल लाऊं या नहीं लाऊं. सो दिस इज वेयर इट हेल्प्स. अब मेरे को एक आइडिया लग गया है कि डेफिनेटली मैं कहीं ना कहीं इस रेंज में रहूंगा, तो एक रफ आइडिया तो लग ही जाता है कि भाई 10 सेल्समैन चाहिएंगे या 15 सेल्समैन चाहिएंगे या 25 सेल्समैन चाहिएंगे या 2 ही चाहिएंगे. दिस इज व्हाट इट टेल्स यू कि गोडाउन्स चाहिएंगे तो कितने चाहिएंगे, क्या 4 गोडाउन के अंदर हो जाएगा या 5 गोडाउन चाहिएंगे. नाउ इफ यू हैव 4 गोडाउन्स और उसके अंदर ये सामान सारा आ रहा है, तो अगर थोड़ा सा खाली रह रहा है तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, बिकॉज आई हैव अ वेरी गुड एस्टिमेट. लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक गोडाउन की प्लानिंग कर लेता और मेरे पास इतना डिमांड आ जाता तो गड़बड़ हो जाती. तो नाउ आई प्लान फॉर 4 गोडाउन्स. हो सकता है आधा गोडाउन खाली रह जाए, हो सकता है थोड़ी सी शॉर्टेज पड़ जाए, बट बाय एंड लार्ज मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, उस रेंज के अंदर पहुंच गया हूँ. तो दिस ओनली गिव्स यू एन आइडिया. Of course, all forecasting methods only give you an idea. It is only an estimation. But this is more of just a trend idea कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है. All trend projection tells us कि ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है या वहीं पे है, बढ़ रहा है तो किस रेट से बढ़ रहा है. जैसे कि अगर इस तरह का कुछ डेटा आ रहा है तो अब मेरे को समझ में आ गया कि ये इस तरह से बढ़ रहा है. कहीं पे अगर मेरे पास इस तरह का डेटा आ जाता तो मेरे को समझ में आ जाता कि मेरा ट्रेंड किस तरह का है, इस तरह का है. तो ट्रेंड बाय एंड लार्ज टेल्स यू कि ग्रोथ हो रही है या डिक्लाइन हो रही है. हाँ, कोशिश की जाती है कि इसमें फ्री एंड प्लॉट कर लिया जाए, लेकिन बहुत बार इसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन भी फिट कर दी जाती है. स्ट्रेट लाइन फिट करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट को जोड़ लिया जाए, या फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट के एवरेजेस को लेकर के जोड़ दिया जाए. बहुत सारे मेथड्स हैं, बट वो सब जने करते क्या है, सिर्फ एक लाइन, एक आइडिया देते हैं हमारे को. फ्री हैंड है तो इस तरह का मेथड यूज कर सकते हैं हम. ये तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लग रहा था तो हमने स्ट्रेट लाइन बना दी. इसमें हमने फ्री हैंड कैसे बनाया, कर्व बना दिया. किसी दिन इफ यू हैव, तो इसका फ्री हैंड किस तरह का बनेगा. तो अगेन वी कैन सी कि हमारे को एक रफ आइडिया मिल जाता है कि अगर मैं यहां आ गया हूं तो नेक्स्ट मैं कहां जाने वाला हूं, या तो इधर या इधर या इधर. इसका मतलब एक रेंज मिल गई. दिस इज व्हाट ग्राफिकल मेथड ऑफ ट्रेंड एनालिसिस विल डू फॉर यू. सिर्फ वो एक आइडिया दे देगा आपको कि कहां पे हमारी सेल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो इट इज नॉट सो मच ऑफ अ गुड फोरकास्टिंग टेक्निक, बस एक ट्रेंड दे देता है, एक आइडिया लगा देता है हमारे को. Then next one is equation method. Equation method हमारी पहले भी बात हुई है कि it is almost the method of least squares that we make use of. क्या है equation method? Equation method suggests y is equal to a plus b x. ये इक्वेशन रहेगी जिसकी कि मैं ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं, इनकी वैल्यू निकाल लूंगा. कोफिशिएंट्स तो होते हैं जो एक रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं. कांस्टेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब ये एक रिलेशनशिप के लिए फिक्स्ड रहेंगे. तो दे आर कांस्टेंट्स आल्सो, दे आर कोफिशिएंट्स आल्सो. तो इन कांस्टेंट्स की एक बार वैल्यू निकाल ली जाएगी और फिर इनको देख लेंगे कैसे होता है. अगर टाइम सीरीज एनालिसिस याद आ रहा है फ्रॉम डेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जब हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी, तो टाइम सीरीज एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि कितने पीरियड्स हैं, देयर आर ऑड नंबर ऑफ पीरियड्स. नाउ जनरली हम क्या कर देने थे, वी वुड हैव कॉल्ड दिस एज एक्स एंड दिस एज वाई.
बट टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर एक बहुत अच्छी बात होती है कि जो टाइम के स्टेप्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो व्हाई नॉट मेक यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी कि जब ये टाइम के स्टेप्स सिमिलर ही हैं तो फिर हम इसको एक्स नहीं कहते हैं, हम क्या करते हैं, डिमांड को तो एज इट इज रहने देंगे, वाई पढ़ा रहने देंगे, लेकिन एक्स मैं खुद कंस्ट्रक्ट करूंगा। आई विल नॉट मेक यूज ऑफ दिस एज एक्स, रादर मैं क्या करता हूं, मैं खुद एक्स बनाता हूं। वो एक्स कैसे लेते हैं, इफ यू रिमेंबर दोज डेज ऑफ टाइम सीरीज कि समवेयर इन द मिडल हम 0 पॉइंट ले लेते हैं। अगर मैं इसको 0 ले लेता हूं तो व्हाट इज दिस, दिस इज 1 पीरियड मोर। 4 को अगर हमने बेस बना दिया है तो ये उससे क्या एक ज्यादा है। व्हाट इज 5 टेलिंग, 5 इज टेलिंग दैट आई एम 1 मोर देन 4। 5 क्या होता है, 4 से एक ज्यादा होता है, तो हम 0 से एक ज्यादा कर देते हैं। क्योंकि रिग्रेशन के अंदर, कोरिलेशन के अंदर ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि उनको एग्जैक्ट वैल्यू से, एब्सोल्यूट वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है, उनको रिलेटिव वैल्यू से मतलब होता है। रिलेटिव वैल्यू से मतलब, एब्सोल्यूट वैल्यू का तो मतलब हो गया कि उनको 5 से मतलब है या 6 से मतलब है, नहीं, उनको रिलेटिव वैल्यू से मतलब होता है। रिलेटिव वैल्यू का मतलब कि इससे कितना ज्यादा होना है या इससे कितना कम होना है, दैट इज रिलेटिव वैल्यूज। तो रिग्रेशन कोरिलेशन के अंदर अगर रिलेटिव वैल्यूज पॉसिबल हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, बहुत ईजी कर देती हैं वो काम को। तो हमने यहां पे इसको अगर 0 मान लिया तो ये 1 ज्यादा है, दिस वुड बी 2 एंड दिस वुड बी 3। इसी तरह से अगर मैं पीछे की तरफ जाता हूं तो 4 से नीचे जाएंगे तो दिस इज 1 लेस, -1 -2 -3। तो व्हाट आई हैव डन इज मैंने अपनी तरफ से x एंड y बना दिए। अब मैंने अपनी तरफ से x एंड y बना दिए हैं, अगर याद है इनको कैसे सॉल्व करते हैं तो कैसे थी हमारी दो इक्वेशंस, सिग्मा y इज इक्वल टू NA प्लस B सिग्मा x, देन देयर इज सिग्मा XY इज इक्वल टू A सिग्मा x प्लस B सिग्मा x स्क्वायर। इन दो इक्वेशंस को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे तो आई विल गेट माय वैल्यूज ऑफ A एंड B, जो इस रिलेशनशिप को डिफाइन करेंगे, जो इस रिग्रेशन रिलेशनशिप को डिफाइन करेंगे। क्या है ये, सिग्मा y एंड सिग्मा x। सिग्मा y सिग्मा x, सिग्मा x लेंगे तो कितना आ रहा है 0, सिग्मा y लेंगे तो कितना आ रहा है 148। दिस इज आवर टोटल। लेट अस चेक वंस अगेन ये सही है या नहीं। आप भी अपनी कॉपी के अंदर इसको करके देख लीजिए, पॉज कर दीजिए, खुद टोटल लगा लीजिए। ये पूरा क्वेश्चन अगर याद आ गया है तो यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्व्स, और अपन वापस टैली करते हैं कि क्या वैल्यूज आ रही हैं। 148। तो वी हैव सिग्मा y, वी हैव सिग्मा x। a और b की वैल्यू तो हमारे को निकालनी है। n होता है नंबर ऑफ पेयर्स बीइंग कंपेयर्ड। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पेयर्स आर बीइंग कंपेयर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 पेयर्स आई एम कंपेयरिंग ऑफ x एंड y, पेयर्स ऑफ x एंड y। So this is 7, this is 148, this is 0. Then I need xy also. So I need x and y, and then I also need sigma x, which I already know, sigma x square. So I'll be needing x square also. These are the values that we need to find out, and then we'll see. So what will be xy? Minus 30. These are the values. 30, 24, 14. Remember, these are negative signs, so please do take care of signs. 30, 46 and 120. And then if I go ahead and add them, how much do we have? 30, and then this is 38, 68. 166 plus 30, 196. Minus this is 30 and then this is 68, minus 68, we get a 128. So sigma of xy is 128. Sigma of x square, 3 square would be 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9. So it will be a 9 and 10, 4, 14, 28. So I get 28. Now we have all the values that we require. We can go ahead and put these values, substitute these values. We'll make use of different colors for different stages so that we can compare the stages. Now next stage would be sigma y.
Sigma y is 148. 148 is equal to NA, 7 pairs, plus B sigma x. Sigma x is 0 to B. Then this equation becomes sigma xy, that is 128 is equal to A sigma x. Sigma x is 0, so it becomes 0A plus B sigma x square. X square is 28, so I can write down 28B. I have substituted the values. Now if I have a look at this equation, what is this equation? This equation says, I'll save some space, 148 is equal to 7A. 0B becomes 0. So I have 148 is equal to 7A, giving me 148 by 7 is equal to A. Implies A is, it was 148 or 128? 148. Sigma y was 148 is 148 divided by 7. We get 21.14. So we have one variable worked out. A, from here if we see, what is this? 128 is equal to, this becomes 0, 0 into A. This becomes 28B, telling me 128 upon 28 is equal to B, telling me that B is 128 divided by 28, making it 4.57. So now I know value of A also and value of B also. So you can say that y is equal to A, that is 21.14 plus B x, B is 4.57. This is the equation that equation method suggests. Equation method suggests that this will be the equation defining the trend in this data. Now what do you need? You wish to forecast data for 8th period. So you put 8 in this equation. Problem is that this equation only contains y and x. So I cannot put 8. 8 should be converted into x according to this scale. I took 4 as 0 and I converted it into this scale. So 8 should be converted into this scale. What is happening? 4 becomes 0, 5 becomes 1, 2, 3. So in a sense 8 will be written as 4. So if you wish to forecast data for 8th month, its code, its x value will be 4. So I can put a 4 over here. And what does this become? When I put 4, y is equal to 21.14. Why am I putting 4 over here? Because I wish to forecast for 8th period. The x value for 8th period would be 4. So this becomes 4.57 into 4. We get 4.57 multiplied by 4 is equal to 18.28. 21.14 plus 18.28 plus 21.14, giving me 39.42. 39.42. So I can say now that the forecast value for 8th period would be 39.42. So if this trend continues, I expect that the value will be 39.42 in 8th period. What about if someone asks value in 10th period? So if time is 10, I need x value of that 10. We have 7 as 3, 8 as 4. So 9 would be a 5, 10 would be a 6. You can have your x value, and then if I try to solve it over here, y becomes
21.14 plus 4.57 multiplied by, for 10 years the X value is 6. Demand I need to forecast. What demand I expect? So for my forecast would be into 6, making it 21.14 plus 4.57, sorry, 4.57 into 6, 4.57 into 6, 27.42. 27.42 plus 21.14, making it 48.56. So I expect that the demand will be 48.56. Now there can be a confusion that why are we writing it under demand? No, this is not the demand, this is a forecast for the demand. This was the data and this is my extrapolation of this data. So these are not exactly demands, these are forecasts of my demand. We are studying demand forecasting. So this is forecast for demand. This is actual data. This is my forecast. Yes, I could have made another column for here for this, but obviously my table ends over here. So this is obviously the projection. So I have data for 7 periods and I have forecasted data for 8th and 10th period, which is 39.42 and 48.56. This is the method of trend analysis where we can make a graphical choice, we can make an equation based choice. Both methods by and large try to fit a freehand curve or a straight line. If we talk precisely, graphical method tries to put a freehand line, which generally is a straight line, and equation method definitely puts a straight line. This is a straight line equation. Y is equal to a plus bx is always a straight line. What this method has actually done is, if your data is this, it has put up a straight line. This y is equal to 21.14 plus 4.57 x is equation of this straight line. And when you say x is equal to 4, x is equal to 6, what it does is, it goes to x is equal to 4, it goes to x is equal to 6. This is the value of 4, this is the value of 6. This is how it is actually working behind the scenes. We are not interested in what is happening over here. This is actually what equation method does, but we are not bothered about this. All we are concerned about is, what is the equation? Equation is the straight line equation. This is the equation and we have solved it. And if we try to connect it to what we have studied in past, we studied in statistics time series analysis. So this is the time series analysis. We are obviously talking time series based methods. In demand forecasting, we are talking of time series based analysis methods. So these are time series based methods, of which we talked about trend analysis today. So this was our last technique for time series based analysis, time series based techniques of demand forecasting. Next time when we meet, we'll study the associative method, associative techniques of demand forecasting. So that was it for today's lecture. Thanks for watching. Bye bye. Take care.